Good morning, students. Today we are going to study about the order and the molecularity of the reaction. In the previous video, we studied about the average rate of the reaction. Okay. The average rate is given like this. R average equal to in respect of the reactants minus del R means change in the concentration divided by the time taken. ओके अब हम ये देखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जिन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है उनमें जो सबसे मेन फैक्टर है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. ओके, so first factor, concentration of reactants and products. Okay, and second important factor is the temperature. Temperature also a very important factor which alters the rate of the reactions. Okay. Now, here we will study about the effect of the change in the concentration of the reactants and the products. Or we can say here we will study about the relation of the rate of reactions with the concentration of the reactants. Okay, look. We consider any reaction, general reaction AA plus BB equal to CC plus DD. Here small a, b, c and d are the stoichiometric coefficient of the reactants and the products. Okay. Now, the expression which correlates the rate of the reaction with the concentration of the reactants is called the rate law expression. Understood? What is rate law expression? The rate law expression is the expression which correlates the rate of the reaction with the concentration of the reactants. Okay. Let rate rate equals to K concentration, molar concentration of reactant A and molar concentration of reactant B. Okay. Now, this is experimentally determined whether the rate of reaction depends upon A in what manner and upon B in what manner. Okay, means these powers of the concentration terms of the reactants may or may not be equal to the stoichiometric coefficient which are in Balance equation. So here we will take the different. Okay, let these are x and y. Okay, so these x and y, x may be equal to a or may not be equal to a. This will be find out by the help of the experimental data. Means जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है किसी भी रिएक्शन के लिए इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एंड दिस रेट लॉ एक्सप्रेशन will tell us how the rate of reaction is depending upon the concentration of the A and how the rate of reaction is depending upon the concentration of the B. Okay. Now look,
we consider another general equation NO plus O2. This on combination gives NO2. Okay, on balancing it, in general there are two type of reactions. The first type of reactions are called elementary reactions. Elementary reactions. How can we define the elementary reaction? Those reactions which completes in one step. Means if a reaction is completing in one step, that reaction will be called elementary reaction. Okay. And sometimes the reaction is not completed in one step. That is the combination of the several steps. Okay. Such reactions are called complex reactions. Okay. For the elementary reactions, no problem, because these are one-step reactions. So this step will be called the rate determining step, and the reaction, the rate law expression will be determined on the according to this elementary reaction. For example, for this one, the rate law is like this: rate equal to K concentration of nitric oxide raised to power 2 and concentration of oxygen raised to power 1. Okay. Is it clear? We can take another examples in which the experimental data are different from the normal data, because those reactions are the complex reactions. They like this. For example, the reaction of the chloroform with chlorine gives us the carbon tetrachloride and HCl. Okay. Just by observing it, we can see the rate law must be rate equals to K, the concentration of the chloroform raised to power 1, concentration of chlorine raised to power 1. But this reaction is, we can see that this reaction is happening in one step, but actually it is not happening in one step. It is the complex reactions, and in complex reactions we have to consider that step which is the slowest step. That will be the rate determining step, and on behalf of that we will find out the rate law expression. Understood? Means if the reaction is complex, means we have to select the slowest step from the total mechanism of the reaction, and that slowest step will be responsible for the rate law. Okay. मीन्स हम उस स्लोएस्ट स्टेप के बिहाफ पे हम रेट लॉ को फाइंड आउट करेंगे. ओके. फॉर एग्जांपल इसका जब रेट लॉ निकालते हैं तो रेट इक्वल टू के concentration of chloroform and concentration of chlorine raised to power half. Okay. Now we come to this point, order of reaction. Okay. So order of reaction is determined from the rate law expression, and rate law expression is determined from the slowest step in case of complex reaction. In case of elementary reaction, no problem, because they are one-step reactions. So that reaction will be the rate determining step. Okay. So finally we can say the rate law is determined experimentally. So order of reaction is also determined experimentally. Now look what is the, or how can we define the order of reaction.
we have to consider the rate law expression. And in rate law expression, the sum of all the powers of the concentration terms will be the order of reaction. For example, for this rate law expression, the order of reaction is x plus y. Why? Because the sum of the powers of the concentration terms x plus y. And here, for the reaction of the chloroform with chlorine to form the carbon tetrachloride and HCl, the concentration power of concentration term of CHCl3 is 1 and that of Cl2 is half. So order of reaction is 1 plus half equal to 3/2. Okay, so order of reaction, finally we can see the properties of the order of reaction. Means order of reaction can be 0, it can be in fraction. Okay, is it clear? फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जीरो में भी हो सकती है, क्योंकि समटाइम्स इट मे हैव हाउ द रिएक्शन इज जीरो. We take another example. The hydrolysis of the ethyl acetate. Okay. This forms acetic acid and ethyl alcohol. Okay. Now here the H2O is taken in excess. By the reaction, this reaction seems to be of second order. The concentration of this ethyl acetate and the concentration of the water. But since the water is taken in excess, so there is no change. There is no visible change, you can say, visible change in the concentration of the water. That's why its concentration is not taken in the rate law expression. So actually this reaction, the rate law for this reaction is K, concentration of the ethyl acetate CH3COOC2H5 raised to power 1, and for the water raised to power 0. तो हम कह सकते हैं कि वाटर के रेस्पेक्ट में इस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के ऑर्डर कितना हुआ 0. तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है. और एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किससे होगी? स्लोएस्ट स्टेप से, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो. और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जस्ट बाय फाइंडिंग द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, नाउ वी मूव अपॉन द मॉलिक्यूलैरिटी. वेरी सिंपल. वी कंसिडर दिस एग्जाम्पल. NO plus O2 equal to NO2. Here the molecularity is 3. How we can say what is the molecularity? Molecularity is the number of ions, atoms or molecules. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. द नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी टू कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली एट अ टाइम टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन. मीन्स रिएक्शन को होने के लिए एक पर्टिकुलर
टाइम पे जितने मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना जरूरी है, दैट नंबर इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलैरिटी। इज इट क्लियर? इसी से हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है इट कांट बी जीरो। क्यों? कम से कम एक मॉलिक्यूल, कम से कम एक आयन या एटम या मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए। तो दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द मॉलिक्यूलैरिटी। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकती है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी बात, मॉलिक्यूलैरिटी में या तो एक आयन होगा या दो आयन होंगे या तीन आयन होंगे या एक एटम, दो एटम, तीन एटम, इस तरीके से होगा, या मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में इस तरीके से, या ये क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकती है, मॉलिक्यूलैरिटी फ्रैक्शन में नहीं होगी। मीन्स मॉलिक्यूलैरिटी जीरो भी नहीं होगी और फ्रैक्शन में भी नहीं होगी। दिस विल बी अ you can say natural number. Okay, this will be a natural number. अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी। जनरली तीन कम मिलती है, लेकिन अगर हमारे पास में कोई इस टाइप की रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हम पोटेशियम क्लोरेट की रिएक्शन देखते हैं फेरस सल्फेट से, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोराइड बनता है, फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल थ्राइड प्लस वाटर। ऑन बैलेंसिंग इट, this one, okay. When we take a look upon this reaction, हमको ये सीधा सीधा इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 + 6 + 3 10 नजर आती है, लेकिन एक साथ 10 मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये दिस रिएक्शन इज नॉट हैपनिंग इन वन स्टेप, दिस रिएक्शन is happening in several steps, or in other words we can say this is the complex reaction. Okay, and अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के जो अलग अलग स्टेप हैं, उन अलग अलग स्टेप्स के लिए हम जो भी मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं वो उस चीज की क्लियर मॉलिक्यूलैरिटी हमको नजर आ जाएगी। ठीक है, जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस रिएक्शन इज हैपनिंग इन वन स्टेप, सो इट्स मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। ओके, तो इस तरीके से हम ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी को समझ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑर्डर की जो ये रेट कांस्टेंट है, इसकी हम यूनिट्स पर जरा ध्यान देंगे। हमारा रेट वाला एक्सप्रेशन क्या था? रेट इक्वल टू K A⁻x B⁻y। ओके, let x plus y equal to 0, means suppose the reaction is of the zero order, means it is not depending upon the concentration of the reactant. We write this 0, this 0. Okay, so rate equal to K, and rate is concentration of rate, sorry, units of the rate, mole per liter per second. Okay, so this is the unit of the rate constant for the zero order reaction, that is mole per liter per second. Now
we find out the unit of the first order reaction. Look here. For the first order reaction, the x plus sum of x plus y is equal to 1. So we can take in this way k a raised to power 1 or in this way. Okay. So I am writing rate equals to k, and for concentration I am writing r raised to power 1. Clear? The unit of the rate is mole per liter per second. Okay, and k, and it is concentration, means mole per liter. So finally this mole per liter cancels with this one. So unit of k for first order reaction will be second inverse. Is it clear? And for the second order reaction, rate equal to k concentration of reactant that R raised to power 2. Clear? Hence concentration, unit of k will be equal to k rate divided by concentration square. Or now I am writing the units of rate and the concentration. Unit of rate is mole per liter per second, and here mole per liter square. Okay. In next step, mole per liter per second, and here mole square, and in numerator liter square. So one this cancels with this one, and 1 mole this one. So finally the unit will be liter upon mole second. Okay, liter per mole per second, or in single line mole inverse liter second inverse. Okay, this will be the unit of the rate constant for the second order reaction. Okay बच्चों, मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसके लिए वो तुरंत आपको उसको नोटिफाई हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.